गुर के चरण जी का निस्तारा, समुंद सागर जिन खिन में तारा। तनासरी महला पंजवा, तृप्त भई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ध्याया। तृप्त भई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ध्याया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए, अनदिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ध्याया। हर सुख निधान नानक दास पाया। मन तन अंतर चरण ध्याया। हर सुख निधान नानक दास पाया। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Please join in to listen to the translation of the Hukamnama in Punjabi to start with for approximately 10 minutes, followed by English. Stay tuned and be blessed. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ? ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
सो गुरु महाराज इस गल नूं बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, जीवना हर जीवना। जीवन का उद्देश एक होए भी हरि की प्राप्ति करनी है। जीवन हर जप साध संग। पर साध संगत जी जब तुसी कल्ले बैठे होंदे हो उदों रब नूं अपने नज़दीक महसूस करना, वो होंदी साध संगत। जिस तरह असी हुण गुरु की गोद विच बैठे हाँ, गुरु दे सिख जगह जगह ते सिख माध्यम राही विचार सुन रहे हैं। यह एक दूजे नूं प्रेरणा करनी, भाई उस परमात्मा दे गुणां नूं अपने हिरदे विच वसाओ, उस परमात्मा की उस्तत करो। प्रेरणा साध संगत जी, नाले विचार साझे हुंदे हन। जे तुहाडा कोई तुहाडे परिवार दे विच समा कढ के अद्धा घंटा पौना घंटा चलो 5 मिनट सारे परिवार दे जी बह के गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का विचार करो, बहुत जरूरी है। असी गुरु महाराज नूं बहुत सत्कार दिंदे हां, नमस्कार करते हैं, पोशाके भेंट करते हैं, होर तरह तरह के खाने पकाने भेंट करते हैं, पर समा भेंट करके गुरु तो ज्ञान भी मंगी है। वो ज्ञान प्राप्त होंदियां उस परमात्मा के दर्शन होंदे ने। जिद्दां गुरु महाराज ने बाणी च फरमाया, ज्ञान विहूना कथ कथ लूझा। ज्ञान तो बिना इंसान गल्लां करदा पर व्यर्थ हो जांदियां, कोई मायना ही नहीं रखदियां। ज्ञान विहूना कथ कथ लूझा। हुण जिद्दां असी साध संगत विच बैठे हाँ, विचार श्रवण करते हैं, गुरु महाराज की कृपा दे नाल साडा निशाना की होना चाहिए। सुखमनी साहब की बाणी दे विच महाराज ने फरमाया, साध संग मिल करो आनंद। गुरमुख प्यारिਆਂ की संगत दे विच बह के उस परमात्मा का नाम जपना, उहदे गुण गाउने, उहदे नाल तुसी आनंद माणोगे। गुण गावो प्रभ परमानंद। उस परमात्मा के गुण गावो जो परम आनंद की बख्शिश करता है। राम नाम तत् करो विचार। हुण राम दे नाम दा विचार करो। विचार तो बिना उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा के गुण हिरदे च नहीं वसणगे। तत्त दा विचार करो भई सृष्टि का मूल कौन है, तो जो असी देखते हैं आले दुआले वो कौन है। तत्त का विचार करो। दुलभ देह का करो उधार। इस तरह जी देह जिन्हों लभना बहुत औखा है, दुलभ लभ मैंने लभना, तो दुलभ मैंने बहुत औखे तरीके दे नाल यह देह मिलती है। बहुत वड्डे भागां दे नाल मनुखा देही मिलती है। दुलभ देह का करो उधार, तां इस देह का उधार हो सकता। अमृत बचन हर के गुण गाओ। हरि दे गुण गाओ तो जिदे नाल अमृत शरीर दे विच पैदा होएगा। क्योंकि अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। हुण साध संगत जी गुरु महाराज फरमांदे ने, गुण गाउंदियां गाउंदियां तुहानूं ऐदां महसूस होए भी परमात्मा अठे पैर साडे नाल है। अगले बचन महाराज ने कीते ने, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा,
मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। साध संगत दे विच नाम जपिया, कथा श्रवण कीती आ, बाणी दा विचार किया, अठे पहर परमात्मा बिल्कुल हाज़र हजूर नज़र आना चाहिए, महसूस होना चाहिए, तां फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होएगी। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हिरदे बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। मन की इच्छा की हुंदी है साध संगत जी? भी चंगे वस्त्र पाइए, चंगा घर होए, रहनी बहनी चंगी होए। सो महाराज फरमाते ने, अनेक प्रकारी वस्त्र उडाए, जदों उस अकाल पुरख नूं हिरदे विच वसा लोगे ते अनेक प्रकारां दे वस्त्र तुहानूं बख्शिश करेगा अकाल पुरख वाहिगुरू। सोहणे लगणगे, तुहाडी देह जिहड़ी आ वो भी सोहनी लगेगी। अनदिन कीर्तन हर गुण गाए, वो गुरमुख प्यारा, वो भगत जिहड़ा उस परमात्मा दे गुण दिन ते रात गाउंदा है। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। जिहड़े भगत ने उस परमात्मा दे मार्ग ते चलन दा जतन किया ते किरपा दे नाल उस मार्ग नूं अपना लिया, ते वो हाथियां दी, घोड़ियां दी, तरह तरह दीयां सवारियां करेगा, बख्शिश हो जाएगी। भाव एक थां तो दूजे थां जाण वास्ते कोई औकड़ नहीं आएगी। परमात्मा दे दर ते जाण वास्ते रस्ते विच कोई रुकावट नहीं आएगी। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए। जिहड़ा उस परमात्मा दे नाम नूं मनदा, उहदे रस्ते विच ठाक भाव रुकावट नहीं आती। वो परमात्मा दे दर ते पहुँच जाता जीउंदियां जी। मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निधान नानक दास पाया। जिन्हां ने मन ते तन करके अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरण कमलों नूं अपने अंदर वसा लिया, उन्हां नूं सुखां दा खजाना परमात्मा मिल पिया। ते नानक दास जो परमात्मा दा गोला है, उन्हें भी परमात्मा दे दर्शन कर ले ते परमात्मा नाल एकमिक हो गया। सो गुरु महाराज रहमत करन। बाकी का समा प्यार दे नाल अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण करना जी। असीसां देनियां, शब्द दीयां डुंगाइयां तक पहुँच के असीं अपना जीवन सफला कर सकीए। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj in Rag Tanasri. Rag Tanasri creates the cheerful mood. In today's Hukamnama, Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the way to the blissful life. How we can be content, because the contentment brings the bliss. Without the contentment, no matter how much one possesses, that person will never be peaceful. बिना संतोख नहीं कऊ राजा, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजा। How we can be content? So Guru Maharaj gives us the jugat, the way, the technique. Tripat bhai sach bhojan khaya. You can only be tript, 100% content, if you feed your soul the true food. You know, people talk about keeping healthy.
And people talk about superfood. That if you eat these seeds, it's like a superfood. And people talk about blueberries. It's a superfood because it is best antioxidant. The superfood for the human body is to meditate and sing upon God's praises and contemplate upon the glory of Almighty God. That's the superfood. That's the true food. That is the only food which will make you content. It will keep you healthy, physically and mentally. त्रिपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया. How do we have that true food? How do we feed our soul with the true food? Guru Maharaj gives us the technique. Man tan rasna naam te aaya. With your rasna, with your tongue, chant the glorious praises of God. Then, with your body, you practice those virtues of Almighty God in your life. And with your mind, you have the purest of pure thoughts, the divine thoughts, always. Now, this is very, very important to understand. A lot of people, they have spent all their lifetime just chanting various kind of mantras. Also, people have been engaged in yogic practices, Kundalini yoga. I was talking to someone, and this gentleman and his wife, they are from Germany. And they were talking about dynamic meditation, where you expose your body to extreme conditions so that you can focus your mind. For example, for 1 week, they had to stay quiet for 3 hours at least every day. And they said it was so difficult to keep quiet. Then, following week, they had to laugh for 3 hours every day. For a week. And it was difficult. Then they had to just talk for 3 hours in the following week. So dynamic meditation. But Guru Maharaj talks about, with your mind, you feel God with you. That is the best meditation, easiest way. When you move your arm, you know without God's presence within you, you cannot move your arm. So I shared my view with them, what I have learned from Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And they were very accepting. And it made sense. When you're ill or when you're suffering, just pray to God. And most importantly, if you pray to God all the time, always consult God for anything you do, then there won't be any illnesses. Simple as that. Parmeshwar te bhuliya Vyapan sabbe rog, Guru Maharaj reveals, the difficulties and pains and sufferings only come when you forget Vaheguru. So if you remember Vaheguru all the time, you're always blissful. So Guru Maharaj reveals, with your mind, feel that God is with you. There was a Gursikh in Guru Nanak Dev Ji's time, and he said, I can't focus on the Gurbani.
When I read Japji Sahib Bani, I can't focus. Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, now you sit in front of me and I'm going to watch you. Now read Gurbani. And that day, Gurmukh Pyara could focus on the Bani because he was aware that Guru is sitting next to me. Next day, Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, repeat that exercise again. So Gurmukh Pyara is again chanting the Gurbani in deep meditation, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj walked away. Came back after an hour, that Gursikh was still in meditation. He was in meditation. After a while, he opened his eyes and Guru Nanak Dev Ji said, how was it? He said, great. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when you are sitting in front of me, I can focus. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj revealed to him that he wasn't there. He had gone away for 1 hour. But that Gursikh Pyara had the acknowledgement that Guru Nanak Dev Ji was sitting there. He had that awareness. Similarly, when we meditate, we should have awareness that God is present. कि हाज़र हजूर हैं, कि ज़ाहिर ज़हूर हैं. God is there. And that is true Sadh Sangat, the company of the holy. Because God is holiest of holy. We come together with the Gurmukh Pyare, the saints of Almighty God, so we can learn from each other. We can exchange our views. We can have better understanding of Gurbani. We talk about Mahapurush. We talk about saints, the Sant, the Babe, which are so blessed. But we should do their company so we can acquire Brahma Gyan. Rather than starting to worship them, we should converse with them, spend time with them, so that we can be enlightened. Remember, it is our personal journey, our personal relationship. As an example, husband and wife, it is their personal relationship. They can't go to Baba individually and say and ask for advice, how do we love each other? Well, it's your personal relationship. You need to develop that loving relationship yourself. So similarly, all the Gurmukh Pyare Mahapurush, they are there to give you advice. But it is one-to-one relationship between you and God. Make sure you have that connection. And Guru Maharaj reveals in Sukhmani Sahib Bani, आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा. 8 means 8, Pahar means watches. 1 watch is 3 hours. So 8 times 3, 24 hours. 24 hours a day, acknowledge that God is with you and within you. God is sustaining you. When you breathe, you are only able to breathe because God is there with you. Without God's presence, you can't even breathe. So feel God, that with every breath, you acknowledge God's presence. Feel that gratitude for God. Then Guru Maharaj guarantees us, Mite agyan bin se andhera, all your darkness, your ignorance, your suffering will depart and will be replaced by the Brahm Gyan. You will merge with God. It is uphill task, but we have to ask for God's mercy so that we can achieve that task. So man tan rasna naam te aaya. With your tongue, with your body, and with your mind, meditate upon God. With your tongue
praise God. With your body, do as God tells you to do. That is meditation. With your mind, have the divine thoughts so that you have kindness, compassion, acceptance, tolerance, humility in your mind. These are the divine qualities which help us to be worthy of God's blessing and mercy. By doing this Sat Sangat, Guru Maharaj reveals, through meditation, you will realize the only purpose of this life is to live for God. So, Jivana Har Jivana. This Jivan, this life is for God. Jivan Har Jap Sadh Sang. So, this is the understanding you get from the Sat Sangat by acknowledging that God is with you all the time. Rahav. Anek prakari bastra udaye. Once the realization of God is attained, there is nothing that you have fall short of in your life. You will feel fulfilled, accomplished. So Guru Maharaj reveals, you will enjoy many kind of clothes. Anek means many, countless. Prakari means kinds. Bastra means clothes. Udai means to wear. Anek prakari bastra udaye, andin kirtan hargun gaye, because God will bless you with all the fulfillment, the contentment. You are singing God's praises day and night. Hasti Rath As Aswari. Hasti means elephant, Rath means chariot, As means horse, Aswari means ride. God will bless you with all kind of rides. Nowadays, we have cars. It's a modern time. Barely people go on the horses or elephants. But it implies you will not have any difficulty in going from one place to other. God will provide you with all kind of rides, ways of transport, and most importantly, God will provide you with the understanding to access God's palace. रब दे महल तक पहुंच जाएगा तू. हर का मार्ग हृदय निहारी, and Guru will enlighten you. So you will walk on the righteous path of Almighty God as defined by God. मन तन अंतर चरण ते आया, हर सुख निधान नानक दास पाया. I must say, Satsanga ji, sometimes we don't know what to do. Because we come across so many people, they have their different views. One will say that you should look right, another person will say you should look left. Someone will tell you, you have to breathe in and chant mantra. Breathe out, chant this mantra. Satsanga ji, just pray to God. We are like a little child. We are children of God. And Guru Maharaj reveals in the Bani, just pray to God so that you learn how to meditate. You learn how to behave. You learn how to conduct your life. God will give you the understanding. You can read many books. Try to acquire the knowledge. You can talk to millions of people trying to acquire the knowledge. But the knowledge that comes from God, that will liberate you. ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ. That will liberate you. So pray to God. ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals,
that I'm slave of God. I've been blessed with the treasure of peace. I've been blessed to be one with God. And this blessing comes from my prayer to God. And now I meditate with my mind and body upon the Almighty God. So साथ संगत जी, सबे इच्छा पूरियां जां पाया अगम अपारा, आठ पहर प्रभ पेखो हो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो. Upadesh, the teaching. What Guru has taught you today, enshrine that teaching in your mind. It is not in your power to implement that teaching by yourself. Pray to Almighty God so we can walk on your marg, on your righteous path, so that we can feel content and blissful. बिना संतोख नहीं को राजै, त्रिपत भई सच भोजन खाया. Now you are eating and consuming the true food, and you will become tript, absolutely content. त्रिपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ध्याया, जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रहा. Forgive all the mistakes. Share the fateh with love. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. वाहे गुरु.